सो सोर्सेस कौन सोर्सेस की उपादान अछि हिस्ट्री इज बेस्ड ऑन सोर्स ऑथेंटिसिटी गोटे हैला लिटरेरी सोर्स सेकंड हैला इनस्क्रिप्शंस आर्कियोलॉजिकल सोर्स साहित्यिक उपादान आउ प्रत्नतात्विक उपादान इनस्क्रिप्शंस बा शिलालेख जो रही ताकू आम निर्भर कर जापर कपिलेन्द्र देव कृतित्व विषय अच्छा जो लिटरेचर अच्छी से पुणी संस्कृत लिटरेचर अच्छी ओडिया लिटरेचर अच्छी तेलुगु लिटरेचर अच्छी बिकज साउथ इंडिया एक्सपांशन करथिला गजपति साम्राज्य कर्णाटक पर्यंत कपिलेन्द्र देव जो उपाधि पाइथिले ना जानछि तो की उपाधि नवगढ़ी कर्णाटक अलवर्गेश्वर तेणु से पर्यंत साम्राज्य विस्तार होता तेणु तमिल स्टेट थिला बा कर्णाटक कन्नड़ थिला तेणु संस्कृत लैंग्वेज अच्छी इनस्क्रिप्ट सोर्सेस संस्कृत ओडिया एंड तेलुगु लैंग्वेज सो संस्कृत लिटरेचर कौन अच्छी व्हाट आर द संस्कृत लिटरेचर on which we have to depend upon in order to know about the achievements of Kapilendra Deva. Sanskrit source. Sanskrit literature. ता भीतर अच्छे हम पाखरे कौन ना परशुराम विजय that is one of the most important Sanskrit literary source परशुराम विजय अभिनव बेणी संहारम संस्कृत रो अभिनव बेणी संहारम एमती जो शॉर्ट क्वेश्चन मल्टीपल क्वेश्चन एमती भी आसी पारे ता भीतर कौन संस्कृत सोर्स कौन थिला सरस्वती विलासम आउटला जगन्नाथ वल्लभ so these are the Sanskrit sources ताछड़ा आउट रहला प्रबोध चंद्रोदय so the sources on which we have to depend upon in order to know about the achievements of Kapilendra Deva we have to depend upon the sources thus they are divided into two parts we can divide it one is literary source second is archaeological source or inscriptional sources साहित्यिक उपादान एवं प्रत्नतात्विक उपादान साहित्यिक उपादान भितर अछि संस्कृत लिटरेचर ओडिया लिटरेचर एंड तमिल लिटरेचर so far as Sanskrit literature is concerned we have to depend upon परशुराम विजय अभिनव बेणी संहारम सरस्वती विलासम जगन्नाथ वल्लभ and प्रबोध चंद्रोदय these are the Sanskrit literary sources which gives us information regarding the history regarding the achievements regarding the cultural development regarding the administration of Kapilendra Deva ता छडा हम पाखरे आउ किछि होछि ओडिया वर्क्स ओडिया लिटरेचर सोर्सेस ओडिया साहित्यिक उपादान कोन अछि ओडिया भितर रहिछि मादळा पांजी ओडिया सोर्सेस तमे होछ मादळा पांजी संस्कृत ना मादळा पांजी that is one of the most important source so far as the Suryavanshi dynasty is concerned or Kapilendra Deva is concerned मादळा पांजी तापर आउ कोन अछि ना सारला महाभारत इन ओडिया मादळा पांजी सारला महाभारत तापर अछि चैतन्य भागवत that is another ओडिया literary source तापर अछि जगन्नाथ चरितामृत अच्छा एइथि जदि क्वेश्चन हो ना ए जो लिटरेरी सोर्स भितरे से या भितरे आउ गोटे कोन बही नाटे ऐड कर देथिबो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट रिगार्डेड as a or the ओडिया सोर्स फॉर कपिलेन्द्र देव और फॉर द गजपति डायनेस्टी आमे चारटा जानिले ता भितरे से आ गोटे कोन देथिबो रामायण भर्ती कर देथिबो कि महाभारत दे दे महाभारत सारा महाभारत अछि सो मादळा पांजी सारा महाभारत चैतन्य भागवत जगन्नाथ चरितामृत चैतन्य ओडिया लिटरेचर चैतन्य चरितामृत आ कोन अछि देखिया मादळा पांजी सारा महाभारत चैतन्य चरितामृत
चैतन्य भागवत आ गोटे चैतन्य भागवत लिखाई ओ चैतन्य भागवत लिखाई आ कौन अच्छी आउ कौन अच्छे ओडिया सोर्स अच्छा यहाँ टे सोर्स बेस्ट फॉलो कर हरिहर पंडा ओडिया लिटरेचर चैतन्य मंगला हाँ এটা কোটে গলা এটা কোন না চৈতন্য মঙ্গলা so these are the Odia literary sources on which you have to depend upon in order to know about the achievements of सूर्यवंशी रूलर्स कपिलेन्द्र देव ता छड़ा आम पाखे रही कौन तेलुगु वर्क्स तेलुगु कौन अच्छी लिटरेरी सोर्स मनुचरितम तेलुगु वर्क्स मनुचरितम मनुचरितम गोटे अच्छी तापर अच्छी कृष्ण रस विजयमु कृष्ण रस विजयमु ये है तेलुगु वर्क्स दे also give us information regarding the history of the Gajapati dynasty or especially Kapilendra Deva ता छड़ा we have also got the Persian literature कौन अच्छी तारीखी फरिश्ता that is a Persian literature ता छड़ा अकबरनामा तबाकत ई अकबरी अकबरनामा तबाकत ई अकबरी that is also another Persian source so they give us information regarding the Gajapati dynasty तेणु गजपति साम्राज्यर इतिहास को जानने हमको यही साहित्यिक उपादान पर निर्भर करने पड़ो संस्कृत लिटरेचर ओडिया लिटरेचर तेलुगु लिटरेचर एंड द पर्शियन लिटरेचर दे आर द चीफ सोर्सेस ऑफ इनफॉरमेशन लिटरेरी सोर्स छड़ा वी हैव टू डिपेंड अपॉन द सम ऑफ द इनस्क्रिप्शंस दे आल्सो गिव अस इनफॉरमेशन किसी अनुशासन रही को मंदिर रे किसी अनुशासन अच्छी सेथुर मध्ये जानि परिबा हमें कपिलेन्द्र देव उनका विषय रे स्पेशली किबा इन टोटल द गजपति डायनेस्टी तेणु गजपति साम्राज्य एवं कपिलेन्द्र देव सेमानका विषय जानिबो खला हम केते उडी इनस्क्रिप्शनल सोर्स रे मध्ये निर्भर करबा पड़िबो इनस्क्रिप्शनल सोर्सेस कौन कौन अनुशासन पुणी कोड देखा अच्छी गोटे इनस्क्रिप्शन अच्छी साउथ इंडिया रो भेलांगलानी एटा जे कॉपर प्लेट इनस्क्रिप्शन ताम्र फलक भेलांगलानी कॉपर प्लेट इनस्क्रिप्शन that is one of the most important source of information regarding the achievements of the Gajapati dynasty भेलांगलानी कॉपर प्लेट इनस्क्रिप्शन तापर अछि आ गोटे कोन अछि लिंगराज टेम्पल इनस्क्रिप्शन आ गोटे जगन्नाथ टेम्पल इनस्क्रिप्शन लिंगराज टेम्पल इनस्क्रिप्शन ने कपिलेन्द्र देव के विषय कोन अछि कहिबो कपिलेन्द्र देव विषय इनफॉरमेशन अच्छी लिंगराज टेम्पल लिंगराज मंदिर रे नाटक मन नहीं जो द लैंप डोनेट करथिले दैट इज द इनस्क्रिप्शन जोटा कि अहोरात्र जळिबो से दीप दान करथिले अखंड दीप दान करथिले से इनफॉरमेशन है कपिलेन्द्र देव के विषय सो लिंगराज टेम्पल इनस्क्रिप्शन जगन्नाथ टेम्पल इनस्क्रिप्शन भेलांगलानी कॉपर प्लेट इनस्क्रिप्शन तापरे आउ कोन अछि इनस्क्रिप्शन फ्रॉम सिंहाचलम आम जो सीमाचलम बोली कहते से नृसिंह सी हूँ से जो सीमाचलम आ कौटी ना श्रीकुर्मम सीमाचलम श्रीकुर्मम so these are the inscription which gives us information regarding
द पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ द गजपति डायनेस्टी। देन गजपति डायनेस्टी विषय दिस आर मोस्ट इंपोर्टेंट इनस्क्रिप्शंस। भेलांगलान है कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन, लिंगराज टेम्पल इंस्क्रिप्शन, जगन्नाथ टेम्पल इंस्क्रिप्शन, सीमाचलम और श्री कुर्मम इन साउथ इंडिया। So they give us information regarding the history of the Gajapati dynasty and especially about Kapilendra Deva। এই সব উপাদান গুড়াক নির্ভর করে জানি পারিবা গজপতি ডাইনাস্টির ইতিহাস।